Good morning, everyone. Am I audible? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तो बोलो ना, फिर आवाज आ रही तो बताइए। ओके, केवल 3 लोग हैं अभी तक। ओके, लेट्स स्टार्ट। So yesterday we were doing adjoint, Hilbert adjoint operator. At the end, what we saw, what happened? So we saw that adjoint operator of a matrix is its transpose. Okay, so let us see this again, and okay, wait a minute. Let's see this again. So yesterday we saw this by a computation. So today we will see it from another angle. So if you recall, if we have, so suppose we are in Rn and we have a linear transformation T from Rn to Rn. Okay. So how do you define inner product in Rn? So standard inner product in Rn is, so for two vectors, say x is x1 to xn, y is y1 to yn. Say we have two vectors. So how do you define this inner product? This inner product is nothing but x transpose y, the matrix multiplication. Okay. By the matrix multiplication. Okay. So this means this is x1, xn,
y1, yn. So when you multiply this matrix, this column matrix and row matrix, so this row matrix and this column matrix, so what you get x1 y1 plus xn yn. And this is what you define the inner product of two vectors in Rn. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Oh, Now what I said, take a linear transformation T from Rn to Rn, and T can be given by a matrix, okay? Then T will be represented by a matrix, say A. Correct? So what we now so what want, we now want, find T star from Rn to Rn such that Txy equal to xt star y. So this is nothing but this is Axy equal to x, whatever A star is, okay? We will find what this A star is. So we need this thing. So from here, from this place, see you have two vectors xy, their inner product is x transpose y. So this Ax, A is a matrix of order n cross n, and x is a vector of order n cross 1. So it's a column matrix. So Ax will be a vector, a column matrix, okay? Something n cross 1. So this Ax is given by Ax transpose y. Do you see this? Axy XY, is this thing. But you know, two matrix AB transpose is A transpose. nahi, nahi, Transpose A B transpose A B transpose. transpose, So this is X transpose A transpose Y. You know matrix multiplication is associative. Matrix multiplication is associative. multiplication is associative. So this means this is So this means this is, huh? Sir, not always. Always matrix always multiplication matrix is multiplication is associative, not associative, commutative. not commutative. Yeah, sir. Yes. Sorry. Okay. So matrix. So that's why we talk about matrix group of matrices. Okay, GL and R, Okay, SL and GL R. and R, SL and R. Mm. So they are not commutative group, but they are group. Okay. That group. Okay. So this is nothing but X, it transpose Y. Okay. But you have proven in a theorem that this transpose is so the adjoint is unique. So from here what we are getting is Axy equal to X A transpose Y. This means A transpose is adjoint is A transpose. Correct? Correct. Mm. Sir. So it's a direct So proof. Similarly in Cn you can do this. In Cn what you do, okay, in Cn if you have two vectors say Z and W, Z and W belongs to Cn. So Z is something like xi1 to xn, and say W is something like eta1 to eta n. Okay.
So what is then ZW, this inner product? This is Z transpose Z transport W. W. W bar. W bar. Do you see this? Do you see So this? So if you remember, if you remember, W is given by I, ZI eta bar. ZI Okay. tab. So in similar fashion, so AZW is AZ transpose W bar. But you know this is Z transpose, A transpose W bar. Okay. This is equal to A transpose, sorry, Z transpose A transpose bar W whole bar, which is nothing but Z. Which is nothing but Z. So this is So conjugate this is and transpose. conjugate and transpose. It is called tranjugate. So A star is A transpose. Okay. Any doubt? Hello. no, sir. hello. Okay. Okay. So now let's see a lemma, which easy lemma. Uh, Before proving this lemma, let's see some more examples. Okay. Let's see some more examples. So take L2 and let's define a linear operator from L2 to L2 given by SR. See, here we have a sequence. In L2, elements are or vectors are sequences. So take this vector in L2, okay, and so SR maps this vector to this vector. So what does SR do? SR shift Shift this alpha 1 to this alpha second 1 place, to second place. alpha 2 to third place. Alpha 2 to third place. Okay. Okay. So this is called a So right this is shift. called a right shift. SR is called right SR is called shift right shift operator. operator. Clearly, SR is operator. You can verify this. Okay. And in fact, this is bounded. SR is bounded. What is norm of SR? Can anyone guess? Hello? Hello? Sir, 0. जीरो क्यों? Zero डेफिनेशन क्यों? क्या है? Definition क्या है? SR of X ये होना SR चाहिए of less than equal X to something ये होना चाहिए less than equal to something C. C of norm X. Okay, C ये of जो X है norm X. Okay, ये जो X है वो L2 का एलिमेंट है, वो L2 L2 का का वेक्टर है. एलिमेंट है, L2 का वेक्टर है.
So X is something like X is something like this sequence. this sequence. Okay. Okay. So SRX SRX is is okay. Take norm of okay. this. Take norm of this. What is its norm? L2 norm? What is its norm? L2 norm? Mod of Summation mod. x Mod to of the power. x to the power. Okay. Let me first write Let me first write full expression of the. full expression of the. Mod. This is the norm. This is the norm. Okay. Which is nothing but Which is nothing but because first is 0. First term is 0. first term is 0. Sir. And this is norm And of this is norm of alpha 1. power. Okay. Okay. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Do you see this? Do you see this? So can you now Yes, guess sir. So can you what would be norm of SR? This is 1. Okay. So okay? One So even तो ऐसे ले रहेंगे 100 क्या? सर नॉर्म 1 तो कैसे ये होगा जो नॉर्म के अंदर अल्फा 1 से लेके जो भी जा रहा पूरा सर तो ये इसकी वैल्यू 1 कैसे क्योंकि किसकी summation- इसकी वैल्यू 1 है. मैंने ये कब कहा कि नॉर्म क्या होता है? नॉर्म तो ऐसा सुप्रीमम सी होता है जो ये सेटिस्फाई करे. हाँ Sorry, supremum कह रहा हूँ. Infimum of all those C which satisfy this thing, this inequality. ठीक है? वो छोटे से छोटा C वो जो ये छोटे से छोटा inequality सी जो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करती है सेटिस्फाई करती है वो नॉर्म होता है SR का. सो नॉर्म ऑफ ऑपरेटर क्या है? भूल गए क्या? हेलो. मैंने Yes, ये sir. नहीं कहा कि इसका नॉर्म 1 है. नॉर्म 1 है. मैंने इसका sir, नॉर्म 1 नहीं मैंने कहा. इसका नॉर्म 1 नहीं कहा. मैंने बोला SR का मैंने नॉर्म बोला क्या? एसआर का नॉर्म क्या? What is norm of what SR? is norm of SR? सर मेरे को लगा कि उसकी सर मेरे को लगा कि उसकी ये मैंने लिखा है ना ये. मैंने लिखा है ना ये यहाँ पर मैंने यहाँ ये पर लिखा मैंने है कि ये लिखा नॉर्म ऑफ है कि एसआर नॉर्म ऑफ एसआर 1 है. 1 है. मैंने यह नहीं लिखा मैंने कि यह नॉर्म नहीं ऑफ लिखा कि नॉर्म ऑफ दिस वेक्टर दिस इज 1. वेक्टर इज 1. ओके. ओके ओके सर ओके. सो सो यहाँ से क्या मिला? तो यहाँ से क्या मिला आपको? ये मैंने इसलिए ऐसा लिख पाया क्यों? ऐसा लिख पाया क्यों? नॉर्म ऑफ एसआर नॉर्म ऑफ ऑफ दिस एसआर अल्फा ऑफ दिस अल्फा इज 1 डॉट नॉर्म 1 ऑफ डॉट अल्फा. नॉर्म ऑफ अल्फा. फाइंड आउट ओके. अभी Okay. आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? ग्रेटर देन के लिए. उसके लिए आप एक आपने ये सब पहले किया हुआ है तो इट इज एन एक्सरसाइज फॉर It is an यू. exercise for you. डू इट.
So from here, so prove SR norm of SR is greater than 1, and from this you will get norm SR equal to 1. Okay, so this is called right shift operator. This is a bounded linear operator with norm 1. Similarly, we may define left shift operator. So now you may guess what will be left shift operator. So can anyone guess what SL alpha 1, alpha 2, alpha 3 so on would be? What would be its image? पोजीशन फर्स्ट सेकंड वाला फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड वाला अल्फा फर्स्ट 2 हो जाएगा, अल्फा अल्फा 2 अल्फा and so on. and so on. Okay. Okay. So in similar fashion, this SL is also a linear operator and it is bounded with norm of SL is 1. Correct? This is called left This shift is operator. called left shift operator. Now, Now we want to we want compute the adjoint of these two operators. Okay, so want to compute adjoint of SR. So it will be SR of X, Y will be X SR star Y using this thing. So what is SRX? So first choose X and Y. So to suppose X is alpha 1, alpha 2, alpha n on, and Y is say beta 1, beta 2, beta n, and so on. Both sequences in L2. Okay. So what is SRX? SRX will be 0, alpha 1, alpha 2 and so on, comma, beta 1, beta 2 and so on. So by definition, this is, what is this? How do you take inner product in L2? inner product in L2. फर्स्ट के एलिमेंट और First सेकंड का element or second. सेकंड का बार प्लस अल्फा 1 बीटा 2 बार प्लस अल्फा 2 बीटा 3 बार and so on. Correct? But this is okay. This is same as alpha 1 beta 2 bar plus alpha 2 beta 3 bar and so on. तो यहाँ पर ये किसका है? अल्फा 1 अल्फा 2 so on and beta 2 beta 3 Beta 3 and so on. and so on. Inner product of this. Inner product of this. By definition, this So is by alpha definition, this is alpha and this is and this is SL. Okay, SL. Okay. sorry. This was X, this was Y. Okay, X was alpha 1, alpha 2, alpha and so on. Y is beta 1, beta 2, beta n. So this is X, this is SLY. Correct? यस सर So this means So this means this SR star is nothing but SL. Okay, and similarly SL star is SR.
Okay. Do you get this? Hello. SLX और while हेलो जैसे कि FNC बैठ जैसे कि SLX SLX क्या क्या पूछे क्वेश्चन? क्या पूछा क्वेश्चन? जैसे बोल रही कि जैसे जैसे किया है बोल रही कि SRX जैसे किया है SRX वैसे ही हाँ SLX सेम, के साथ वैसे ही SLX के साथ हाँ सेम सेम है, हाँ सेम है ठीक है। क्या आप क्या करेंगे? SLX Y, SLX is alpha 2, alpha 1, sorry, alpha 2, alpha 3 and so on. Y is beta 1, beta 2 and so on. So this is alpha 2 beta 1 bar plus alpha 3 beta 2 bar and so on, correct? Okay. So this is 0 dot sorry alpha 1 dot alpha 0 1 bar dot 0 bar beta 1 bar. So this is alpha 1, alpha 2, comma 0, beta 1, beta 2 and so on. So this is X, this is SRY. SRY. So what you get? So SLX what you get SLX Y is XSRY. So from this thing you get SL star is SR. Any doubt? सर हाँ, ये चीजें अब आप खुद से करेंगे तो ट्राई करेंगे तो आप इजीली सीख पाएंगे, ठीक है। जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन रहेगा। ओके। इसके अलावा आपने ये पढ़ लिया होगा एलपी स्पेसेस। हैव यू सीन दिस इन योर मेजर थ्योरी कोर्स? यस सर। पढ़ा है ना? सर ने बताया Yes, होगा sir. इसके नॉर्म के बारे में। हेलो, यस सर ये बताया ना ये नॉर्म डिस्प्लेस है। नॉर्म डिस्प्ले से Yes, sir. आज बताया लेक्चर है। लिया इसका था major आज लेक्चर के लिया और साथ में सर ने बोला होगा ये कंप्लीट भी होता है। Yes, sir. So this means this is a Banach space. Okay. Yes, sir. So तो आपने ये फंक्शनल एनालिसिस वाली क्लास में मैंने आपको स्मॉल एलपी स्पेसेस बताया था। Similarly, there are these capital LP spaces. These are integrable functions. So spaces of Lebesgue integrable function means not exactly Lebesgue integrable, but this should be integrable. This should be finite. If f belongs to LP, this means this is integrable. Okay. So आपने देखा कि for आपने देखा कि for p not equal to 2, p not equal to LP 2 is LP is not a Hilbert space. not a Hilbert space. Yes, Similarly, sir, in CP. capital Similarly, LP, in capital LP, for p not equal for to 2, p not LP equal to is 2 LP is not a Hilbert space. not a Hilbert space. So only L2 So is a only Hilbert L2 is space. a Hilbert space. Okay. Okay. So for this, So for what this, you have to what you do, have to do, you remember
the parallelogram the law, parallelogram law, वहां पर हमने देखा था ना कि वहां पर जो हमने भी देखा इनर था कि प्रोडक्ट जो भी इनर प्रोडक्ट पैरेललोग्राम लॉ को पैरेललोग्राम लॉ को सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई करता है, वही वही नॉर्म वही देगा, नॉर्म देगा, है ना? यस सर। सॉरी, वही नॉर्म स्पेस इनर नॉर्म प्रोडक्ट से स्पेस आएगा, इनर ये प्रोडक्ट हमने से आएगा, ये हमने प्रूव किया था। एग्जैक्टली सर, So, इनर प्रोडक्ट को so- फाइंड आउट करने के लिए हमें हाँ। पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी में जाना होता है। देखो, देखो every every inner product gives a norm, gives a norm, okay? okay, But converse is not but true. converse is not true. Not true means Not true means not every not norm every norm comes from comes from an inner product, an inner product. okay? Okay? So अब So, हमें ये पता करना अब है हमें ये पता करना है कि कौन सा नॉर्म कौन इनर सा प्रोडक्ट नॉर्म से आया इनर है। प्रोडक्ट से आया है। के लिए इसके लिए हम हम पैरेललोग्राम लॉ का यूज पैरेललोग्राम करते हैं, ठीक है? अगर कोई इनर प्रोडक्ट अगर कोई इनर पैरेललोग्राम प्रोडक्ट पैरेललोग्राम लॉ सेटिस्फाई कर रहा लॉ है सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो वो जो नॉर्म जो नॉर्म स्पेस है नॉर्म स्पेस है वो इनर प्रोडक्ट से आएगा, वो इनर प्रोडक्ट से आएगा, ठीक है? अगर कोई नॉर्म स्पेस अगर में कोई नॉर्म स्पेस पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, तो वो इनर प्रोडक्ट चाहता है, ये हमने देखा था। चाहते हैं, ये हमने देखा था। तो similarly L2 is a Hilbert space, but LP for P not equal to 2 is not a Hilbert space. Okay, here is an exercise for you. Okay, find Hilbert adjoint. And the Hilbert adjoint of the following operator on L2AB. L2AB में स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शंस होंगे, तो T from L2AB given by when, so T will act on F is in L2, okay, and this whole will, this is a function, means TF is a function in L2, okay, so TF is an element of L2, so therefore it is a square integrable function. So since this is a function, we define this TFL as eta T ft. So it's this f is same as this f, but this eta T is a fixed complex valued Lebesgue measurable function, where eta T is a fixed complex valued Lebesgue measurable function defined on interval a comma b. Okay, so let me
Now come to the lemma that I was talking about. So I will not prove it. I will use this lemma. I have written a proof for you in the notes. Since it is very easy, you can see there, okay? Let X and Y be inner product, two inner products, and we have a bounded linear operator Q from X to Y. Oh, this is bounded linear operator, and this be bounded linear operator. Then number one, if Q equal to 0, if and only if Qxy equal to 0 for all x, for all x in x and y in y. This we have seen now. If you remember this kind of thing we were doing yesterday. If Q from x to x is okay. If we have this, where x is the complex vector space. Inner product space. Then Qx implies Q equal to 0. Okay, here for x in x. Okay, this is a small exercise. You can do it your own. And I have given a proof. You can see that. Now let's see some properties of Hilbert adjoint operator. So theorem. So suppose we have two Hilbert spaces, H1 and H2. H1, H2. These are two Hilbert spaces. And T and S are two bounded linear operators from H1 to H2. And alpha is an scalar. Then, number first, T star Y comma X is same as Y comma Tx for all X in H1. Y in H2. Do you see why? Why this is true? Can anyone suggest some, give some idea? खुशबू हाँ कैसे करेंगे बताओ? मतलब कि फर्स्ट वाली चीज कैसे है ये हाँ फर्स्ट वाली चीज कैसे आई? तो सर कल हमने एक वो देखा था ना कि y is equal to in a t conjugate y ये उससे नहीं हो जाएगा। केवल डेफिनेशन का यूज करना पड़ेगा। देखिए t star y x, okay, this is same as x comma t star y bar, ठीक है?
ये तो होता है ना, एक्स वाई इज सेम एज वाई एक्स बार। x bar. इज इट ट्रू? Yes, Yes, sir. sir. ओके, नाउ यूज डेफिनेशन ऑफ दिस। ये वाला पार्ट क्या होगा? एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या थी? Adjoint की definition क्या थी? Equal to x of t star y. हम्म, Hmm? X transpose X transpose T star Y ट्रांस y. ट्रांसपोज कहाँ से आएगा? Transpose कहाँ से आएगा? x comma y bar X एक मिनट, व्हाट इज एक्स टी स्टार वाई? inner product of tx comma y. हाँ, ये होगा टी एक्स कॉमा वाई, देन इसका बार, Yes, sir. बिकॉज दिस इज टी एक्स कॉमा वाई। ओके, ये क्या नहीं जा रही है, बट देन व्हाट इज दिस? नाउ यूज एक्स वाई इज वाई एक्स बार। What is this? Y Y, y बोलिए। ytx. वाई टी एक्स, ये तो प्रूव करना था। ytx ये तो प्रूव करना था। टी स्टार वाई एक्स इज वाई टी एक्स, टी स्टार वाई एक्स इज वाई टी एक्स। ठीक है, ओके। Yes, sir. नेक्स्ट थिंग, सेकेंड, टी प्लस एस स्टार इज टी स्टार प्लस एस स्टार। ओके, so let's see this. So x comma t plus s star y, क्या होगा ये? By definition this is, हाँ, हाँ? Plus s. split वाली definition लगा लेंगे. Split वाली definition लगा T लेंगे। plus s. t plus x comma T plus x, comma Y. y, y. but this t and s both are y x functions, तो ये क्या होगा? tx plus sx comma y. Okay, now use linearity of inner product, linear in first variable. So this is tx comma y plus X, comma sx y comma plus y. sx, comma y. Okay, Okay? so from here what So is this? from here, what is this? tx y same as X, y is same as? यहाँ पर क्या था ना, tx y, यहाँ पर क्या है? कहाँ पर क्या है? ओ ये t स्टार था यहाँ ओ पर, ये tx T स्टार था y यहाँ पर। Tx, y same as, same as? नहीं t स्टार नहीं था, T स्टार नहीं था। इधर इधर देखो, tx y इधर देखो, Tx, y Product of x comma t star y. comma चल T. जाएगा. हाँ, x comma t star y, and second one is Inner product of x comma s star Comma y. S star y. okay. Okay. Now you see, Now you use see, you use the property of inner product. So this is same as x comma t star y plus s star y. Okay, so this is nothing but x comma t star plus s star y. ठीक है ना? So this gives
t plus s star equal to t star plus s star. Okay, do you get this? समझ में आया ना? Yes, sir. Okay, next part, third, alpha s star is alpha bar s star. So अभी आप लोग बताइए कैसे करेंगे? सेम वही प्रॉपर्टी जो आप यूज कर रहे हैं वैसे करना है. क्या करेंगे? अल्फा एस x comma y is same as x comma alpha s star y. Okay. तो यहाँ से क्या आएगा बताइए? हेलो Star x conjugate. हाँ कैसे आएगा बताइए? एक मिनट, इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं. अल्फा एस स्टार what is this? This is equal to Of alpha x comma alpha s y. ठीक है? This is same as x comma alpha s y. ये अल्फा this alpha belongs to k. Alpha is an scalar. conjugate. x comma s y. यहाँ से क्या मिला आपको? अल्फा बार s star X, Y. x y. ये अल्फा इस बार अंदर गया तो ये है आपको मिला. ये है इनर प्रोडक्ट. ठीक है? So from here what you get, this implies alpha s star equal to alpha bar s star. So you have to do a little of work here. केस में ऊपर भी जो हमने किया था वहां भी आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. वो क्या होगा? दिस एंड दिस. ओके, अभी ये मैं बाद में लिखूंगा, अभी इसको हटा रहा हूं. ये सही है इनफैक्ट, बट मैं इसको एक स्टेप और ऐड करता हूं इसमें. सो फ्रॉम हियर व्हाट यू गेट, अल्फा एस स्टार एक्स वाई माइनस alpha bar s star x comma y equal to 0. So this is alpha s star x minus alpha s star x comma y. This is alpha s star minus alpha bar s star x comma y equal to 0. And this is true for all x in h1, y in h2. Okay? Sir. यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करें, x in h2, y in h1, because s star is a function from h2 to h1. Yes, sir. Okay?
ओके, तो इसको थोड़ा ध्यान देना, तो इसको हम थोड़ा कहाँ से ध्यान देना, कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ठीक। तो here this x is in H2, this y is in H1. So if you remember, this is 0 for all y in H1, so this means this is 0. और ये हमने लेमा में देखा था, देखो x y equal to 0 for all x in x, y in y, then q is 0. Okay, this means this is 0. And which is nothing but these two are equal. Okay, next, similarly you can prove ts star is s star t star. So फिर से वही आपने यूज करना है, ts star y comma x, using the definition, this is tsx. Okay, so this is t of s of x. और यहां से क्या मिलेगा आपको डेफिनेशन के हिसाब से, T star Y T star y X X sx, and then sx, and then S का star of T star Y comma SX comma X. और फिर से इसको दूसरी साइड ले जाओ, है ना, जैसे अभी ऊपर किया था, टी एस स्टार वाई कॉमा एक्स माइनस एस स्टार टी स्टार वाई कॉमा एक्स इज 0 एंड यूज इनर प्रोडक्ट Combine टी एस करेंगे स्टार माइनस एस स्टार टी स्टार वाई कॉमा एक्स 0 फॉर ऑल वाई इन H2 x इन H1, और ये तब होता है जब ये वाला पार्ट 0 हो. This implies Ts star equal to S star T star. True. Okay. So fifth thing, T star star, which is T star of star is T. So ये प्रूव करना इजी रहेगा आपको. So use T star star x comma y. This is by definition x comma T star y. Okay. okay, ठीक है ना ये? ठीक है ना ये? Sir, डबल स्टार आएगा। नहीं, देखिए एक मिनट, फिर से इसको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा दोबारा देखते चलिए. डेफिनेशन यूज करनी, ठीक है. एक्स कॉमा x टी comma स्टार वाई t star y, क्या होगा, ये क्या होगा? टी स्टार T of स्टार T star star Y y, है ना. है ना? कोई डाउट? कोई डाउट? और ये सेम है और ये सेम है टी एक्स वाई के. t x y के. आप लोग यही तो कर रहे थे ना, जब जहां पर ये एस, ओके, एस स्टार वाई एक्स को आप क्या कर रहे हैं, एक मिनट फिर से मैं लिखता हूँ. हमारे पास
थोड़ी देर के लिए टी स्टार को मैं एस मान लेता हूँ, ठीक है। एस मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको, इस पार्ट को मैं लिखता हूँ एक्स कॉमा एस वाई। तो ये क्या आना चाहिए बाय डेफिनेशन? हाँ, एच स्टार एक्स कॉमा वाई, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? हेलो, यस सर। इसमें प्रॉब्लम है? ये तो डेफिनेशन है ना? एक्स एस स्टार वाई इक्वल टू एस एक्स वाई होता है डेफिनेशन। ठीक है सर। ठीक है या नहीं है? ठीक है। ठीक है, ओके। अब इसको फिर से लिख देते हैं, एस की जगह मैं टी स्टार से रिप्लेस कर रहा हूँ इसको। एक्स टी स्टार वाई इक्वल टू एस क्या था, टी स्टार, उसका स्टार एक्स कॉमा वाई। ओके, बट बाय डेफिनेशन दिस इज टी एक्स कॉमा वाई। So from this and this t minus t star equal to 0. This is because these are true for all x in h1, y in h2. Any doubt? Then more, norm of t star t is norm of t square. So t star t is composition of t star and t. So t is from h1 to h2 and t star is operator from h2 to h1. So what is t star t then? This is operator from h1 to h1. Okay, and tt star is operator from h2 to h2. ठीक है ना? यस। Now use definition of norm t. This is supremum x in h1, norm x less than equal to 1, norm tx square, which is tx with same x in h1 and norm x less than equal to 1. Okay, so now use t star here. So this is t star of tx comma x in h1, norm x less than equal to 1. Or from here use Schwarz inequality, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर ये tx था तो ये norm t, norm x, norm y आ जाएगा. So this will be less than equal to norm t star t, norm x square हो गया. So supremum x in h1, norm x less than equal to 1. And since norm x is less than 1, this is less than 1, so this is less than equal to t star t. Okay. और
ये जानते हैं नॉर्म टी स्टार इक्वल टू नॉर्म टी. Okay, so this is less than equal to norm t star, norm t, which is equal to norm t square. So this implies norm t star t is norm t square. Okay, so this means if norm, okay, if t star t is 0, implies t is 0. Why? Because this 0 means norm t square is 0. Norm t square 0 means norm t is 0. And some norm of something is 0 means that. Okay, so this was all about Hilbert adjoint operator. So in next class, means tomorrow, we will see self adjoint operators. There are few exercises. I have given you hint there. Please do these exercises. Okay then. Any question? हेलो, कोई क्वेश्चन है या नहीं? अगर नहीं है तो फिर हम लोग कल मिलेंगे. बाय. सर. हाँ बोलिए. सर एक क्वेश्चन था सर. बोलिए. सर ये प्रूफ करना है कि इमेज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सेट इन एक्स अंडर टी इज क्लोज इन वाई. तो सर क्लोज प्रूफ करना है तो फिर सिर्फ ये दिखा दूं कि एक्स क्लोजर में है तो एक्स उसमें भी आ जाए. सिर्फ इतना ही करूं क्या? हाँ, अगर मींस वो क्लोज है मींस लिमिट पॉइंट वो सब लिमिट पॉइंट जो है वो सेट में है. जी सर. ठीक है. कॉम्पैक्ट का मतलब कुछ भी यूज नहीं हो रहा है यहाँ तक मैं देख पा रही हूँ. नहीं, वो यूज होगा ना बिना कॉम्पैक्ट कैसे यूज करोगे? सर सर डेफिनेशन वो वाली लगा लेंगे ना कि अगर मेरे पास टी क्लोज्ड हो गया तो ग्राफ क्लोज होता है. अगर ग्राफ क्लोज होगा तो उसके लिए भी तो एक डेफिनेशन थी कि कोई एक्स मिल जाएगा जो कन्वर्ज करेगा एक्स पे, इसी तरह से टी एक्स वाई पे जाएगा. तो वो वाली डेफिनेशन यूज कर लूँ सर क्लोज के लिए? हाँ, ये वाली डेफिनेशन यूज कर सकते हो. लेकिन क्लोज की डेफिनेशन ग्राफ जो है एक्स क्रॉस वाई में होगा, वो वहां पर क्लोज. तो टी फ्रॉम एक्स टू वाई है तो इसका जो ग्राफ है वो एक्स क्रॉस वाई का सबसेट होगा. सर क्लोज मींस इसका ग्राफ क्लोज. सो ग्राफ क्लोज आप जानते हैं कोई सेट कब क्लोज्ड होता है. ठीक है. ओके सर. सर वही डेफिनेशन लगानी है कि एक्स को लेके चलूं क्लोजर में और देन उसको दिखा दूं कि वो सेट में भी है. हाँ ओके सर. ठीक है सर. ठीक है. और कोई डाउट? ओके, अगर नहीं है तो फिर हम कल मिलेंगे. बाय.